यू नो ना हाउ आवर पेरेंट्स रिपीट वन थिंग सो मच कि इवेंचुअली आपका ब्रेन उसे म्यूट ही कर देता है. फॉर मी दैट सेंटेंस वॉज योगा किया करो. एंड द फनी पार्ट इज आई लिटरली टीच योगा टुडे. सो दिस एंटायर स्टोरी स्टार्टेड व्हेन आई वॉज अराउंड 7 years old एंड मेरा भाई 10 साल का था. मेरे पापा रोज सुबह हमें 6 बजे उठा करके प्राणायाम करवाते थे. अब उनके लिए वो हीलिंग था, बट फॉर अस इट वॉज प्योर टॉर्चर. वी वर जस्ट किड्स. हमें इनर पीस नहीं, एक्स्ट्रा स्लीप की रिक्वायरमेंट थी. बट फॉर माई डैड योगा genuinely changed his life. He was going through some serious health issues at one point and yoga helped him physically and mentally in a huge way. So for him yoga was never just exercise, it was personal. और अगर इंडियन पेरेंट्स किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं तो वो प्यार से नहीं, रोज़ किसी ना किसी तरह याद दिला करके बिलीव करवा ही लेते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे माई डैड वॉज जस्ट एन इंडियन डैड. आई रिमेंबर इवन इन स्कूल हमें रोज़ आधा घंटा योगा करवाया जाता था. एंड उधर पे भी बदमाशी, आँख खोल लेना, टाइम पास करना, इधर उधर देखना, बस सम हाउ सर्वाइविंग दैट हाफ एन आवर. बट समवेयर आई थिंक बॉडी ब्रेन से भी पहले चीज़ें नोटिस कर लेती है. बिकॉज इवन दो आई नेवर एडमिटेड इट बैक देन, कभी अच्छे से योगा करके हल्का तो फील होता था, लाइक कामर, मोर फोकस्ड, लाइटर. बस तब समझ नहीं थी. एंड देन लाइफ मूव्ड ऑन. सो आई चोज साइकोलॉजी बिकॉज आई वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट. एंड जब लोग कहते थे पागलों को ठीक करेगी, माई डैड वॉज माई बिगेस्ट सपोर्टर. ही वॉज द ओनली पर्सन हु सेड अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम करो. एंड ऑनेस्टली दैट सपोर्ट चेंज समथिंग इन मी. बट मीन वाइल बैकग्राउंड में उनका वो एक लाइन चले जा रहा था, योगा किया करो. आई मीन हिज कंसिस्टेंसी लेवल वॉज इनसेन. आई रिमेंबर मेरे बैचलर्स के फाइनल एग्जाम से 15 दिन पहले वी हैड दिस 15 days का स्टडी ब्रेक जहाँ पे अगेन ही स्टार्टेड योगा किया करो. एट दिस पॉइंट आई थॉट उन्होंने अपना लाइफ मिशन ही ये बना लिया. सो फाइनली उनको खुश करने के लिए आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई. सो आई वेंट फॉर दिस शॉर्ट योगा कोर्स इन ऋषिकेश एंड दैट एक्सपीरियंस वॉज समथिंग डिफरेंट. इट शिफ्टेड समथिंग इन मी एंड आई वुडंट से कि एनलाइटनमेंट मिल गया, काम वाइब्स, ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि वैसा कुछ नहीं था. बट आई रियलाइज दैट आई वॉज स्टिफ, mentally exhausted, always rushing, and those few days slowed me down in a way I didn't know I needed. That entire experience was amazing because for the first time I experienced yoga beyond stretching. But फिर reality entered again. Exams, masters, entrance, shifting to Bangalore, internships. Life became fast again. But एक चीज़ जो constant था वो था योगा किया करो. एंड ड्यूरिंग ऑल दिस माई IBS गॉट इवन वर्स. एंड गट इश्यूज़ वाले लोग समझेंगे कि स्टमक सिर्फ स्टमक को अफेक्ट नहीं करता, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मूड सब कुछ तबाह कर देता है. मेडिकेशन टेम्परेरीली हेल्प करती है बट लाइफस्टाइल मैटर्ड मोर. एंड गेस कौन वापस आया? पापा का योगा किया करो. At this point I was still convinced कि one day he would definitely get tired of saying this one sentence. But turns out his commitment was stronger than most people's New Year's resolutions. मुझे क्यों तोड़ा? So I slowly started practicing sometimes. ना तो consistent थी, ना perfectly करती थी, बस try करती थी. Cut to my masters, internship सब कुछ खत्म हो गया था and I had to come back because my brother was getting married and my mom needed my help. And after all the wedding chaos, for the first time in years, I had space to think. So I decided, okay fine, let's give yoga a chance. So finally, I went to Rishikesh for 2 yoga teacher training courses. And post 10 days, I injured my leg. And honestly, that phase broke me a little because imagine finally committing to something and then sitting there watching everyone else continue while you physically can't. But weirdly, that phase also taught me the biggest lesson. That yoga is not always performance. It's not कितने flexible हो, कितना advanced pose करते हो, Instagram पे कितने aesthetic लगते हो. It is way beyond all these stuff. I tried to attend the theory classes there, then came back, healed slowly, completed my rest of the course online, and then started practicing on my own. And somewhere during all this, one thought kept growing in my head. Why are yoga and psychology treated like separate worlds when they are literally so connected? One works on the body, other works on the mind. But both affect each other constantly. Your stress affects your body, your breathing affects your emotions, your nervous system affects your thoughts. Like everything is so connected. And suddenly my entire journey started making sense. The psychology, the yoga, the health struggles, the resistance, even my dad irritating me for years. Everything connected.
So eventually, I completed my advanced training too. And this year, I started teaching yoga. And genuinely, the best part has not been becoming a yoga teacher. It's been watching people feel better, sleeping better, breathing better, feeling more connected to themselves again. Because honestly, most people today are not physically tired. They are mentally overloaded. Constant stress, constant overstimulation, constant rushing, and somewhere in between, people forget how to simply exist peacefully in their own body. And that's exactly why I want to combine yoga with psychology. Na hi extreme wellness or na hi toxic positivity. Just practical things for real people living real life. On a side note, one of my friends used to say, never say never. And I used to roll my eyes at her. Because if someone had told that 7-year-old me, the same girl who was dragging herself to 6 a.m. pranayam with her dad, that she would become a yoga teacher, I would have laughed and gone back to sleeping again. But life has a weird sense of humor sometimes. When life gives you lemonade, make lemons. Life will be all like, what? So if you're someone trying to understand your mind better, feel calmer in your body, change your relationship with stress, or just survive life without constantly feeling overwhelmed, I think you will feel at home here. This channel is basically where psychology meets yoga meets real life chaos. And if this story connected with you, do like, comment, share and subscribe. And maybe give yoga a chance. So Papa, if you're watching this, I know you're watching this, congratulations. After approximately 15 years, several arguments, 2 psychology degrees, IBS, an injury, multiple life crises, and a few yoga teacher training courses, I can officially confirm that yoga kiya karo was actually decent advice. And yes, you were right. Please enjoy this moment because I don't plan on saying that again anytime soon. 毛巾羽毛烧呀呀，水温刚刚好。婆婆睡来做泡泡，今天真是美妙，大声唱歌扭扭腰。